ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिः सक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरको रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुगाव पुत्रेदि तन्मयदा तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमध्यात्मं दिपितदां तितितीर्षितां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां दन्नविदुसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्माया शेते शतमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृषिष्ट भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय हरे कृष्णाय वयं नुमः। अद अष्टमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक नैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षर अभिगृणानो मुहूर्तत्रयम् उदकान्त उपविवेश तत्र तदा राजन् हरिणी पिपासया जलाशयाभ्यासमेकै वोपजगामः तयापेऽपि याम उदगे तावदेव अविदूरेण नददो मृगपतेरुन्नादो लोकभयङ्कर उपतपत्। तमुपश्रुत्य सा मृगवधू प्रकृतिविक्लवा चकितनिरीक्षणा सुधरामपि हरिभया अभिनिवेश्य व्यग्रहृदया पारिप्लवदृष्टिरगद तृषाभयात् सहसैवोचक्राम तस्या उत्पतन्द्या अन्तर्वत्या उभरया अवगलितो योनिनिर्गतो गर्भस्रोतसे निपपात। तत्प्रसवोत्सर्पणभयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमान कस्याञ्चिदर्यां कृष्णसारस्वती निपपाताद च ममार। तं त्वेण कुणगं कृपणं स्रोतसान्यूहमानम् अभिवीक्ष्यापविद्धं बन्धुरिवानुकम्पया राजर्षिर्भरद आदाय मृतमादरमित्याश्रमपदम् अनयत्। तस्य हवा एण कुणक उच्चैरेदस्मिन् कृतनिजाभिमानस्य अहर हस्तल्पोषणपालनलालनपीडनाम् अनुध्यानेन आत्मनि मायाः सहयमाया पुरुषपरिच्छेद्यादय एकैकशः कतिपयेन अहर्गणेन वियुज्यमानाः किल सर्व एवोदवसन् अहोबदायं हरिणकुणकः कृपण ईश्वर रथचरण परिभ्रमणरयेण स्वगुणः सुहृद्बन्धुभ्यः परिवर्जित शरणं चमोपसादितो मामेव मातापितरौ भ्रातृज्ञातीन् यौधिकां श्चैवोपेयाय नान्यं कञ्चन वेद मयदि विस्रब्धजात
एवमया मत्पराणस्य पोषणपालनपीडन लालनम् अनसूयूनानुष्ठेयं शरण्योपेक्षा दोषविदुषा न्यूनं ह्याराः साधव उपशमशीलाः कृपणसुहृद एवं विदार्थे स्वार्थानभि गुरुतरानुपेक्षन्ते इति कृतानुषङ्ग आसन शयनाडन नडान स्थान अशनादिषु सहमृज जगुना स्नेहानुबद्धहृदय आसीत् कुशकुसुम समिद पलाश फलमूलोदकन्यानि आहरिष्यमाणो मृगशाला मृगादिभ्यो भयमाशंसमानो यदा सह हरिणकुणके न वनं समाविशति पदिशिचु मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्तम् अधिप्रणय भरहृदय कार्पण्यात् स्कन्देनोद्वहति एवमुत्सुङ्ग उरसि चादायोपलाळय मुन्मुद परमामवपाप क्रियायां निर्वर्त्यमानायाम् अन्तराळे अप्युधायोधाय यदैनम् अभिचक्षीद तर्हि भावः स वर्षपतिः प्रकृतिस्तेन मनसा तस्मा आशिष आशास्ते स्वस्ति स्ताद्वस्त ते सर्वद इति अन्यदा वृषमुद्विग्नमना नष्टद्रवण इव कृपण स करुणमदि तर्षेण हरिण कुणग विरह विह्वल हृदय सन्तापस्तत् एवानुशोचन् किल कश्मलं महद् अभिरम्भित इति होवाच अपि बद स वै कृपण एण बालको मृदहरणि तदो अहो मम अनार्यस्य षटरिरादमते कृत सुकृतस्य कृतविस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन तद विगणयन् सुजन इवागमिष्यति अभिक्षेमेणास्मिन् आश्रमोपवने षष्पाणि चरन्दं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि अभिच्चनवृकः सालावृक अन्यतमो वा नैकचरम् एकचरो वा भक्षयति निम्लोचदि ह भगवान् सकल जगत्क्षेमोदय स्त्रयात्माद्यापि मम न मृगवधून्यास आगच्छति अपि स्वीकृत सुकृतमागत्य मां सुखयरिष्यति हरिणि राजकुमारो विविध रुचिर दर्शनीय निजमृगधारक विनोदैर् असन्तोषं स्वानाम् अपनुदन् श्वेलिकायां मां मृषा समाधिना अमीलितदृशं प्रेम संरम्भेण चकित चकित आगत्य पृष अपुर विषाणाग्रेण लुटति आसादित हविषि बर्हिषि दूषिते मयोपालब्धो बीद बीदः सबुद्ध्यपरसरास ऋषिकुमारवद् अवहितकरणकलाप आस्ते किं वा अरे आचरितं तपस्तपस्विनान्यया यदियम् अवनी सविनय कृष्णसारद नयतरुनुतर सुभग शिवद अखर खुरपदं पङ्क्तिभिर्द्रविण विदुरातुर्यस्य कृपणस्य मम द्रविणपदवीं सूजयन्त्यात्मानं च सर्वदा कृतकौतुकं द्विजानां स्वर्गापवर्गकामानां देवयजनं करोति अभिस्विदस्सो भगवानुडुपतिरेनं मृगपति भयान् मृदमातरं मृगबालकं स्वाश्रयपरिभ्रष्टं अनुकम्पया कृपण जनवत्सल परिपाति किं वा आत्मज विश्लेष ज्वरदवदहन शिखारि बिरुदपि अपमान हृदयस्थल नलिनीकं मामुपसृत मृगीतनयं शिशिरशान्तानुराग गुणितनि जवदन सलिलामृतमय गभस्तिभिः स्वदयतीति च एवम् अखटमान मनोरथाकुलहृदयो मृगधारकाभासेन स्वारब्धकर्मणा योगारम्भणदो विश्रम्भितः स योगतापस्सो भगवदाराधनलक्षणा च कथमितरता जात्यन्तर एण कुणक आसङ्गः साक्षान्निहि श्रेयस्स प्रतिपक्षतया प्राक्परित्यक्तदुस्त्यज हृदयाभिजातस्य तस्येवम् अन्तराय विहद योगारम्भणस्य राजर्षेर्भरतस्य तावन्मृगार्भगपोषणपालन प्रीणल लालन अनुषङ्गेण अविगणयद आत्मानम् अहिरिवाकुलिम्बिलं
दुरितिक्रमकालकराळरभस आपत्यद तदानीमपि पार्श्वद्विवर्तीम् आत्मजम् इवानुशोचन्तम् अभिवीक्षमाणो मृग एव अभिनिवेशितमना विसृज्य लोकम् इमं सह मृगेण कळेबरं मृदमनुन मृदजन्मानुस्मृति इतरवं मृगशरीरमवाप तत्राभिहवा आत्मनो मृगत्वकारणं भगवद् आराधनसमीहानुभावन अस्मृस्मृतभृशम् अनुतपय्यमान आह अहो कष्टं भ्रष्टाकम् आत्मवदानम् अनुपदयाद् विमुक्तः समस्तसङ्गस्य विविक्त पुण्यारण्यशरणस्यात्मवद आत्मनि सर्वेषाम् आत्मनां भगवति वासुदेवे तदनुश्रवण मनन संकीर्तनाम् आराधन अनुस्मरण अभियोगेन शून्यकल सकलयामेन कालेन समावेशितं समाहितं कार्ष्ण्येन मनस्तस्तु पुनर्मम अबुद्धस्यर्यान् मृगसुतम् अनुपरिसुस्राव इत्येवं निगूढनिर्वेदो विसृज्य मृगीं मादरं पुनर्भगवत्क्षेत्रम् उपशमशीलमुनिगणगदयिदं शालग्रामं पुलस्त्य पुलकाश्रमं कालञ्जरात् प्रत्याजगाम तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणः सङ्गाच भृशमुद्विग्न आत्मसहचर शुष्कपर्णतृणविरुद्धा वर्तमानो मृगत्वनिमित्तावसानमेव गणयं मृगशरीरं तीर्थोदकक्लिन्नम् उत्ससर्ज इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतचरितेष्टमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। थैंक यू।